You can start, sir. Okay. Do I finish it by 6 o'clock? So you can finish it by 6:10. Okay, fine. Thank you. Hello, good evening, everybody. Good evening, Antriksh, Ishika. Good evening, everybody. Uh, in my previous two lectures, we had started an overview of CPC. I intend to make CPC a easy subject because somehow there is a feeling that uh, mastering CPC is a Herculean job, but it is not. So it's a very simple subject. Let's try to make it simple. Now, before I start the lecture, please let me tell you that we have the Unacademy as one of the premier institutions now in the country for preparing for judicial examinations. I joined Unacademy about 8 months back, and I can vouch that probably it is one of the best institutions in the country helping students to crack judiciary. We are teaching about 35 laws, and we are catering to about 10 states. We have regular language classes, general knowledge classes, and we have 7 days a week classes, starting from 9:30 to 7:30 in the evening. My batch, comprehensive batch, is there. The icing on the cake is that it is very modestly priced at about 37,000 rupees per for a year, and plus you get a discount of about 10%. You can use my name, Anil Khanna Educator, and by code you can get 10% discount. Good evening, Mukesh. Now, the best part about Unacademy is that you are getting the details of every law sitting at home in these times of trying times of COVID. Probably this is the best deal one can have, and at such a modestly priced whole aspect. Now, I will advise all my students to join. This is one of the, as I said, the best places to join to crack judiciary. Okay, coming to our topic, I had started CPC in my previous two lectures, and we had discussed in detail all the introductory parts of CPC. Just a quick recap. We have seen that the CPC code came into being on 1st of January 1909. It is called the CPC 1908. We've also seen that in any criminal or civil justice system, we can divide it into two basic parts. The first part being where we what we call the substantive part, where we have the rights. Rights kaun se hain? So substantive law always tells us what are the rights given to us by law. If any right is infringed, I want a relief. So what is the procedure by which I can get a relief? That aspect is covered by procedural law. CPC 1908 is that procedure. As far as substantive laws are concerned, we have many laws. We have the law of contract, one, two, SOGA, partnership, so many acts which give us substantive rights as far as civil rights are concerned. In my previous lectures, we have seen that as an overview of CPC. CPC is divided into 158 sections, divided into 11 parts. And earlier there were five schedules. Now we have only one schedule left containing 51 orders. Schedule 2, 3, 4, and 5 were repealed by various acts in various years. And that is the reason why today we have one schedule, and plus we have eight appendices containing all the forms which are used all over India. Good evening, Amit. Now, CPC, as far as the sections are concerned, I told you in my last lecture that the sections can be amended only by the legislature. However, procedure, because India is such a diverse country, naturally, what is true, what is the procedure in Punjab may not be suiting the procedure in maybe in a northeast. So that is why what we have done is that we have given the power to make rules in the orders to the high courts. And this rule making power is given in CPC itself to the high courts to make rules. So that is why when we come to the definition of the word prescribed, prescribed by rules, who makes the rules? The high courts to suit their own states.
We had covered all these grounds in my previous lecture. Then we had come to the brass tacks, how we reach CPC. See, we have a civil right. That civil right has been infringed. Now, this person whose right has been infringed is naturally what in criminal law I would call a complainant or an informant if he is going for an FIR. Here he is called the plaintiff. Now, this infringement of a civil right has given rise to what I call a cause of action. Why do I call it cause of action? A cause of action in the court. So it gives rise to a cause of action, and on this cause of action, I am seeking a relief. How will I seek a relief? Through a claim. So what is the development? I have a civil right. Somebody has infringed it, and that infringement has given rise to a cause of action. Good evening, Loveleen. Now, that cause of action has given rise to a claim in which I'm asking for a relief. That is how we interrelate these things. Now, my cause of action has arisen, and now I'm moving the court with a plaint. I'm instituting a suit. I'm instituting a suit under Section 26. But before I institute a suit, I must know to which court I have to go. पहले सबसे पहले पता ये लगाना पड़ेगा कि मैं किस कोर्ट में जाऊं. पहले 25 सेक्शन सीपीसी के बताते हैं कि मैं किस कोर्ट में जाऊं. द जुरिसडिक्शन. सीपीसी में जो जुरिसडिक्शन है वो है पहला टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. क्या कोर्ट का टेरिटरी के अंदर आता है? पहला पॉइंट. दूसरा पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन. सेक्शन 6. सेक्शन 6 क्या कहता है? पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन. मेरे सूट की वैल्यू क्या है? उस वैल्यू का जो जो वैल्यू है, क्या कोर्ट उसको ट्राई करने में सक्षम है? इज द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट? फॉर दैट मैटर वी ऑल्सो इंटररिलेटेड विद सूट्स वैल्यूएशन एक्ट एंड जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कोर्ट्स एक्ट हैं, उनसे हम देख लेते हैं कि कोर्ट की पावर है उस सूट को ट्राई करने की कि नहीं. सी, जैसे क्रिमिनल लॉ में हम देखते हैं कि जितना बड़ा ऑफेंस होता है उतना बड़ा कोर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, डेथ पेनल्टी से मर्डर का मामला है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला है, तो नॉर्मली कौन सा कोर्ट होगा? सेशन कोर्ट होगा. छोटे मामले छोटे कोर्ट्स होंगे. सिमिलरली सिविल लॉ में पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ज्यादा डिटरमिन करता है. जितना बड़ा पेक्यूनरी मामला उतना बड़ा कोर्ट. सो दैट इज व्हाई पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस हैव बीन गिवन इन डिफरेंट स्टेट्स. हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस वेरियस कोर्ट्स को दी हुई हैं. सिविल कोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा जो सिविल कोर्ट है वो हाई कोर्ट होता है, और सबसे छोटा जो होता है जूनियर सिविल कोर्ट होता है. तो वो पूरी कोर्ट्स की आपस की उन्होंने दे हैव गिवन देम अकॉर्डिंगली देयर पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन. तो पहला एस्पेक्ट, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि मैं कहां जाऊं, तो मैं कहां जाऊं के अंदर सबसे पहले चीज आती है ए, मेरा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है कि नहीं. बी, मेरा पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है कि नहीं. थर्ड, क्या मेरा सूट सिविल नेचर का है कि नहीं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कि चलो आपका अगर टेरिटोरियल ना भी हो, कोई गलत कोर्ट ने कर लिया, कोर्ट तो है ना वो. और अगर पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं भी थी तो उसने कर लिया, फिर भी ठीक किया जा सकता है. बट अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है ही नहीं मेरी, अगर मेरा मामला सिविल नेचर का है ही नहीं, तो फिर नेचुरल है कि नाउ दिस कैन नॉट बी सेट राइट. सो दैट इज व्हाई सेक्शन 9, जितने भी सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर हैं उनको कोई भी सिविल कोर्ट डिपेंडिंग ऑन देयर पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कैन ट्राई दोस सूट्स. तो इसका मतलब हो गया, पहली जुरिसडिक्शन हो गई हमारी टेरिटोरियल, दूसरी हो गई पेक्यूनरी, तीसरी हो गई सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन. क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से मैटर्स सिविल जुरिसडिक्शन में नहीं आते. वो सेक्शन 9 ही कहता है कि सिविल कोर्ट कैन ट्राई एनी मैटर ऑफ अ सिविल नेचर प्रोवाइडेड इट इज नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ. अब क्वेश्चन ये उठता है कि बार्स कौन से हैं. क्या कहीं सीपीसी में बार्स हैं? पहला बार सेक्शन 4. सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई लोकल या स्पेशल लॉज हैं और उनका अपना प्रोसीजर दिया गया है तो फिर सीपीसी लागू नहीं होगा.
सेकंड, सेक्शन 5, अगर रेवेन्यू मैटर है तो वो सीपीसी में नहीं जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू मैटर्स का अपना बहुत बहुत अच्छा तामझाम है, उनका बहुत प्रॉपरली वेल डिफाइंड उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इस मामले में, सो दैट इज व्हाई इट विल नॉट कम अंडर सीपीसी। सिमिलरली स्मॉल कॉजेज है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं, दो तरह के स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होते हैं, एक प्रोविंशियल और एक प्रेसिडेंसीज के। प्रेसिडेंसीज के दोनों, तो वी हैव स्मॉल कॉजेज प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट एंड प्रोविंशियस स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। अब सारा सीपीसी वहां लागू नहीं होता, उतना ही लागू होता है जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ने कहा है, इतना सीपीसी लागू होगा बस। सो दैट इज व्हाई सिंस दे हैव देयर ओन प्रोसीजर्स, दैट इज व्हाई मोर और लेस सीपीसी डज नॉट अप्लाई। Similarly, the rules also don't apply. This is clarified by Order 50 and Order 51, जो कहता है कि ये रूल्स हमारे जो शेड्यूल 1 में दिए हैं ये अप्लाई नहीं करेंगे, बोथ इन प्रेसिडेंसीज का स्मॉल कॉजेज कोर्ट, सिमिलरली प्रोविंसेस के स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। तो अगर हम देखें बार्स कहां कहां है, तो बार्स को हम मान सकते हैं बार्स टू अ सूट इन सीपीसी, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, रेड विद 50, 51 ऑर्डर्स। अब क्या एक सूट अगर चल रहा है तो उसके ऊपर क्या और बार्स हैं? क्या देर आर एनी बार्स टू द सेम सूट? यस, नाउ बार्स टू द सेम सूट आर गिवन इन सेक्शंस 10, 11 एंड 12 ऑफ सीपीसी। अगर एक मामला ऑलरेडी किसी कोर्ट में विचाराधीन है, ऑलरेडी इट इज अंडर कंसिडरेशन इन एनी ऑफ द कोर्ट्स, देन sub judice applies. So that means I cannot bring up the same matter between the same parties in any other court, because naturally it would be a amount to grave injustice to the defendant. Similarly, res judicata, if a matter has been finally decided and between the parties, so naturally once a matter has been finally decided between the same parties, I can't bring it again and again, so then res judicata applies. Also, section 12, where there are certain bars laid down by CPC. There are many rules, there are many orders which lay down specific bars. For example, Order 2, Rule 2. So all those bars will also be a bar. So please remember, we have three types of bars to the same suit. A, when the matter is already under consideration, section 10. When a matter has already been finally decided, section 11. And then bars laid down by the rules of CPC. Now, there may be some judgments of foreign countries. Can they be executed in India? Yes, because it is based on the basic principle of comity of courts. What is a comity of courts? कि हम चाहते हैं कि जो कोर्ट हमारे अगर जजमेंट्स को ऑनर करे तो हम भी उनकी जजमेंट्स को ऑनर करेंगे. दिस इज कॉल्ड द कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स. वी हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. So basically, in section 13, any judgment of a foreign court can be executable in India, and we presume under section 14 that it was properly passed. With certain countries we have reciprocal relationship जहां पे हम सीधा एग्जीक्यूशन के लिए डाल सकते हैं, उसको हम सेक्शन 44A में ले आते हैं. तो एज फार एज फॉरेन जजमेंट्स आर कंसर्न्ड, वी हैव सेक्शंस 13, 14 रेड विथ 44A. सेक्शन 15 क्या कहता है कि जो सबसे छोटा कोर्ट है, सपोज अब मेरा मामला छोटे कोर्ट में भी ज्यूरिसडिक्शन आता है, बड़े कोर्ट में तो है ही है, तो सब कहेंगे हम लोअर कोर्ट में क्यों जाएं, हम सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं. तो फॉर दिस पर्पस सेक्शन 15 हैज बीन क्राफ्टेड कि कोई भी अगर आपने सूट डालना है तो जो लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहां जाओगे. सो बात क्लियर हो गई कि जो सबसे छोटा कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है वहां आप अपना सूट डालोगे. नाउ एक और तरह का बार आता है, वो क्या है कि अगर मेरा मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी से कंसर्न्ड है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर मामले हैं तो वो सूट आप कहां डालोगे, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सेक्शन 16, 17 और 18. So wherever my immovable, whenever the matter concerns any of the matters listed in section 16, then the suit shall be instituted in the place where that immovable property is situated. So 16, 17 and 18 deal with immovable property.
But suppose it happens to be a movable property, or it is a compensation regarding to a wrong to a person, then section 19. Now, the plaintiff has a choice. Always please remember, the plaintiff has moved the court. The plaintiff has moved the court because his right was infringed. The cause of action rose for him, and that is the reason why he is asking for a relief through a claim. And now, naturally, who is going to defend it? He's called a defendant. Now, the plaintiff has the right of choice. There are sometimes there is a choice for a plaintiff कि आप ए जगह भी डाल सकते हो या जहां डिफेंडेंट रह रहा है वहां भी डाल सकते हो. अब नेचुरली जान के प्लेंटिफ तंग करने के लिए ऐसी जगह डाल सकता है जहां डिफेंडेंट नाराज तकलीफ में आए. सो ऐसे मामलों के लिए नेचुरली प्लीज रिमेंबर, लॉ इज evenly balanced for everybody. Just because the plaintiff has instituted the suit doesn't mean that plaintiff is always right or plaintiff के लिए हक में law झुक जाएगा. No, the matter has not been resolved till now. So that is the reason why wherever there is an objection regarding the place of suing, तो वो sections 21 से लेकर 25 तक डिफेंडेंट नेचुरली जाएगा कि सर यहाँ पे तो मुझे तंग करने के लिए यहाँ डाला है उसने, तो उसको ठीक कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ सूट्स वगैरह, ये सारे मामले पहले 25 सेक्शंस में होते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड. पिछली बार हमने डिस्कस भी किया था, दिस वाज जस्ट अ रीकैप, कि पहले 25 सेक्शंस में कायदे से वेयर डू आई गो, मैं कहां जाऊं, कौन सा जुरिस्डिक्शन कोर्ट का होगा. Once we are clear with those matters, naturally the next question which arises is, next question क्या उठता है कि अब मैंने सूट डालना है. Now when once I am instituting a suit, naturally the question arises that how do I institute a suit. Section 26 से कायदे से हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है. We start the civil justice system from section 26. Now, my right was infringed. It gave rise to a cause of action. This cause of action has now made me go to the court. Which court do I go? I've come to learn in the first 25 sections. How do I start? Do I put up a petition? Do I put up an application? What do I do? So, for this purpose, we have a plaint. The word plaint is a creation of CPC section 26. A suit shall be instituted by a plaint. Now, when I say a suit shall be instituted by a plaint, naturally the question arises, what is the procedure? So please remember, the procedure of putting up a plaint is given in order 4. So section 26 read with order 4 tells us in what way a plaint is to be instituted. Now, a plaint has been put up. The question arises, why the word plaint was used? How does a plaint become different from a petition? This is the most important word. So please remember, a plaint becomes a plaint becomes a plaint if it is governed by order 1. उसकी parties हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे order 1 में बताया गया है. So order 1 tells us how the parties to a suit, whether it is a plaintiff or a defendant, उनको कैसे जोड़ा जाएगा. So हम haphazardly नहीं जोड़ सकते. We have to follow the rules given in order 1. As far as causes of action are concerned, we are putting up claims. So I will put up my claims haphazardly. I am not allowed to do that. So order 2 tells us how I will put up my causes of action. What will be way of introducing my causes of action and my claims. So order 2 tells us if my claims arise from one cause of action, तो क्या करूंगा, और अगर मल्टीपल कॉजेज ऑफ एक्शन है तो उनके क्लेम्स को कैसे जोड़ा जाएगा. सो कायदे से प्लेंट प्लेंट कब बनती है? जब उसमें पार्टीज कौन जुड़ेंगी? एज पर ऑर्डर 1. उसके अंदर क्लेम्स कैसे जुड़ेंगे? एज पर ऑर्डर 2. नाउ आई कांट राइट अ हैपहैजर्ड प्लेंट. That is the reason why, since I can't write a haphazard plaint, it has to be governed by certain principles. For example, it must be concise, it must be precise. So these aspects are all dealt with principles which will govern pleadings. Now, what do we mean by pleadings?
Now, a WS of a defendant, that means a written statement of a defendant, जो वो जवाब देगा, and the plaint of a plaintiff is called a pleading. तो अब प्लीडिंग के चाहे वो प्लेंट हो प्लेंटिफ का या जो रिटन स्टेटमेंट आएगा डिफेंडेंट का, उनके प्रिंसिपल्स क्या गवर्न करेंगे, वो ऑर्डर 6. सो माय प्लेंट is a plaint because it is governed by first by the rules given in order 1 as far as parties are concerned. How my claims will be joined as per order 2. What will be the principles governing order 6? And now, what will be the contents of a plaint? When will I return the plaint? When will I reject a plaint? All those aspects, order 7. So, if I was to revise, a plaintiff will institute a suit under section 26 in the procedure given in order 4. A plaint becomes a plaint if it is governed by order 1 as far as parties are concerned, by order 2 as far as claims are concerned, by order 6 as far as principles are concerned, and all the aspects of a plaint as far as order 7 is concerned. Now the work of plaintiff is over. Now the next point is to call the defendant. How do I call the defendant? By sending him a summon. So, how do I send him a summon? Because please remember, if a summon is not received by him, he will not appear. And if he does not appear, maybe an ex parte judgment or an ex parte decree is passed against him. So, naturally, it becomes a very serious matter. That is the reason why the entire process of sending summons is dealt with in great detail in Order 5. किस तरह से डिफेंडेंट को समन देंगे, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, प्लेंटिव हमदस्ती ले जाएगा, वगैरह वगैरह, ऑल कितने तरह का हम तरीका अपनाएंगे डिफेंडेंट को बुलाने का. Order 5. Now the question arises. In criminal law, the accused has to be present throughout in the criminal trial. In civil law, it is not necessary. 3 persons can appear. A, the party, वो तो आ ही सकती है. B, recognized agents. So plaintiff and defendant can be represented by their recognized agents. Who's a recognized agent? All these aspects are given in order 3. Now, also the third person who can represent a party is a pleader as per order 3. So order 3 के मुताबिक 3 लोग appear हो सकते हैं. A, party, B, the recognized agent, and C, the pleader. Now please remember, प्लीडर का रोल एक सिविल लॉ में कहीं ज्यादा है क्रिमिनल लॉ में. कैसे? प्लीडर एक तरह से ही कैन, इफ ही मेक्स एन एडमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन सिविल लॉ, इट इज एडमिशन ऑफ द पार्टी. बट इन क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं है. कन्फेशन बाय एन एडवोकेट, बाय प्लीडर on behalf of the accused cannot be taken as a confession except in 1 or 2 sections petty offenses के अलावा कोई confession जो है एक अगर कोई advocate, he can't make it on behalf of his client. But in civil law, admissions made by pleaders are always receivable against the client. Now, अभी हमने देखा ऑर्डर 1 में पार्टीज कैसे जुड़ेंगी, ऑर्डर 2 में क्लेम्स कैसे जुड़ेंगे, ऑर्डर 3 में कौन कौन अपीयर होगा, ऑर्डर 4 में प्लेंट का प्रोसीजर क्या है, ऑर्डर 5 में डिफेंडेंट को किस तरह से समन दिए जाएंगे, ऑर्डर 6 में प्रिंसिपल्स क्या हैं, और लास्टली ऑर्डर 7 में एक प्लेंट कैसे लिखी जाएगी. चलो, डिफेंडेंट को मिल गया, he has already received the summon. What is the next step? Now he has to give his answer. He has to come up with the answer, क्योंकि उसको ऑलरेडी समन के साथ प्लेंट की कॉपी मिल जाती है. So now naturally the next step is that he has to come back with his answer. Now, this coming back with his answer, this answer is called what we call a written statement. Order 8. अब 3 पार्ट्स हो सकते हैं रिटन स्टेटमेंट के. पहला, which is purely defensive in nature. आपने मेरे खिलाफ क्लेम्स डाले, मैं उनको निगेट करता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट होता है. उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपने भी मेरा पैसा देना है, मैंने भी आपका पैसा देना है, बट ओनली हम स्पेसिफिक पैसे की बात कर रहे हैं. तो फाइन, आपने मेरे 10 रुपए देने, मैंने आपके 9 रुपए देने, सर 1 रुपए की डिग्री पास कर दो. सो व्हाट वी कॉल सेट ऑफ, जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे को
ड्यू है पैसा, तो वहां पे सेट ऑफ के लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट कर सकता है। और तीसरा तरह बात होती है जहां वो ऑफेंसिव में जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज वेयर द डिफेंडेंट इट इज एक्टिंग एज अ प्लेंटिफ। ही ब्रिंग्स हिज ओन कॉज ऑफ एक्शन, ओन क्लेम। वो कहता है सर ये मेरे से क्या पैसे मांगता है, इसने मेरे साथ गलत किया है, इस ट्रांजैक्शन में इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरा कहीं ज्यादा लॉस हुआ है। सो ही ब्रिंग्स हिज ओन ऑफेंसिव पार्ट। सी ही कैन पुट अप अ सेपरेट सूट ऑल्सो। पर अगर सेम मामला है, सेम पार्टीज हैं, तो वाई गो फॉर अ सेपरेट सूट, वाई नॉट इसी में क्यों ना निपटा दें उसको। सो दैट इज वाई द थर्ड एस्पेक्ट इज अ काउंटर क्लेम। सो प्लीज रिमेंबर डब्ल्यू एस के तीन पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट, एज आई सेड, डिफेंसिव पार्ट विच इज अ डिफेंस टू द क्लेम्स जो प्लेंट में आए हैं, उसका आंसर। सेकेंड पार्ट, आप भी, मेरा भी ड्यू है, आपका भी ड्यू है, दोनों को सेट ऑफ कर दो, दैट दैट वी कॉल सेट ऑफ। और तीसरा जो मेरा ऑफेंसिव पार्ट है, जिसको मैं काउंटर क्लेम कहता हूं। चलो जी, अब प्लेंटिफ का भी काम खत्म, डिफेंडेंट का भी काम खत्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नाउ अभी तक कोर्ट पिक्चर में नहीं आया था, अब पहली बार कोर्ट को पिक्चर में लाएंगे। बट बिफोर वी गो टू द कोर्ट, अब क्या होता है कि सपोज डिफेंडेंट और प्लेंटिफ कोर्ट में आते ही नहीं, पहली हेयरिंग है, पहली हेयरिंग से पहले पता चला प्लेंटिफ ही नहीं आया, या दोनों ही नहीं आए, आपस में उन्होंने बाहर सुलटारा कर लिया, या प्लेंटिफ ने पैसे नहीं जमा कराए, तो डिफेंडेंट को समन कहां से जाएगा। सारा सिविल जस्टिस सिस्टम में सब कुछ प्लेंटिफ ने डालना है पैसा, तो अब उसने पैसा नहीं डाला, एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट गो, द समन्स डिड नॉट रिसीव द वर नॉट रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट। तो क्या करें, ऐसे मामलों के लिए बना है ऑर्डर 9। तो उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर प्लेंटिफ की गलती है, प्लेंटिफ की गलती क्या हो सकती है, प्लेंटिफ नहीं आया, प्लेंटिफ नहीं आया उसका डिफॉल्ट हो गया, या प्लेंटिफ ने पैसे नहीं भरे, या जब समन वापस आया उसने दोबारा पैसे नहीं भरे। तो ऐसे मामलों में क्या करेंगे हम, वी विल डिसमिस हिज सूट। सो डिसमिसल ऑफ सूट, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इस पे, डिसमिसल ऑफ सूट इज कवर्ड बाय ऑर्डर 9। तो डिसमिसल किसके लिए होगा, प्लेंटिफ के लिए। सो जब भी मैं डिसमिसल ऑफ सूट की बात करता हूं, तो नेचुरली आई एम इंप्लाइंग द प्लेंटिफ। अब अगर वो डिसमिसल बाय डिफॉल्ट है, अब जब हम डिक्री की डेफिनेशन में जाते हैं, क्लियरली लिखा है कि एनी डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, यानी कि प्लेंटिफ नहीं आया, इज नॉट अ डिक्री, ये डिक्री नहीं है। नाउ अब अगर डिफेंडेंट नहीं आया, तो अब क्या करें, तो अब आता है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स। तो अब अगर सपोज पहली हियरिंग पे नहीं आया, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, मान के चलो डिफेंडेंट है, और अब आप अपनी प्रोसीडिंग चलाओ। सो देन वी स्टार्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। बट सपोज डिफेंडेंट थ्रू आउट नहीं आया, अब ये थोड़ा कि अब डिफेंडेंट कैन होल्ड द एंटायर जस्टिस सिस्टम टू रैंसम। सो व्हाट विल द कोर्ट डू, वो कहेगा चलाओ, हम ये मान के चल रहे हैं डिफेंडेंट प्रेजेंट है, तो डीम्ड प्रेजेंस मानते हैं, और अब प्रोसीजर चलता रहेगा, ट्रायल चलता जाएगा, और अंत में एक एक्स पार्टे डिक्री पास हो जाएगी। when we pass an ex parte decree, basically please remember it is like any ordinary decree, and this is the reason why an ex parte decree, though it appears it is against the principle of natural justice, कि डिफेंडेंट आया ही नहीं और उसके खिलाफ डिक्री पास हो गई, इट इज नो डाउट, देखने में लगता है कि इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट देन यू नो व्हाट हैपेंस इज वी आर employing what we call the principle of necessity. अब अगर कोई नहीं आ रहा, ये तो है नहीं कि हमने उसको भेजा है, समन उसको मिल गया है, अगर वो फिर भी नहीं आ रहा, हम क्या करें, उसके पैर पकड़े जाके कि प्लीज आ जाओ भाई साहब, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए व्हाट डू वी डू, वी हैव टू नाउ कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स एज इफ ही इज प्रेजेंट। तो अब एक्स पार्टे डिक्री चली जाएगी। अब नेचुरली क्योंकि ये चीज बिल्कुल खिलाफ है, दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, सो नाउ व्हाट डू आई डू, तो अब तरीका है कि उसी ऑर्डर में, यानी ऑर्डर 9 के जब मैं रूल 13 में जाता हूं, तो सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिक्री बताया गया, एंड प्लीज रिमेंबर वही सेम कोर्ट भी उसको सेट असाइड कर सकता है अगर सफिशिएंट कॉज हो। यू नो द वर्ड सफिशिएंट कॉज बहुत बार आता है सीपीसी में। सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है, एक रीजनेबल कॉज, एक ऐसा कॉज
जो मेरे गले उतरता है, जो मुझे लगता है जेन्युइन कॉज था कि पार्टी क्यों नहीं आ पाई। सो इसीलिए सफिशिएंट कॉज को बहुत सारे जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जहां इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया कि सफिशिएंट कॉज हम कब सफिशिएंट मानते हैं। सो वंस इट इज प्रूव्ड कि हाँ वो सफिशिएंट कॉज था, देन नाउ आई कैन सेट असाइड द डिग्री। उसका कारण क्या है? सेटिंग असाइड के बहुत सारे उन्होंने वेज बताए हुए हैं रूल 13 में। उसका कारण ये है 9-13 के अंदर कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। हमने उसको सुनवाई करे बिना, उसके मेरिट्स में जाए बिना हमने डिग्री पास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पूरा मौका देते हैं डिफेंडेंट को, ताकि अन्याय ना हो जाए। I'm sorry, I'm run out of time. I'll take it up from here in my next lecture next week on Wednesday. Please don't forget to attend. We will cover the next part in my next lecture. I hope all of you have understood today's lecture. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you all. Thank you. Thank you, Nitesh. God bless you. See you all next week. Bye bye.